So, yet is a wonderful purport which Srila Prabhupada concluding. If you see the slokas look like little technical, how the different limbs of the Lord, they represent different plates of sacrifice. भगवान को हम ऋषिकेश बोलते हैं. ऋषिकेश का मतलब क्या होता है? हमारे जो इंद्रियां हैं उसके स्वामी. तो जो इंद्रियां हैं उनके स्वामी भगवान हैं, तो उनका जो राइट एप्लीकेशन है, यूज है, वो भगवान की सेवा में लगना है. लाइक अम्बरीश महाराज, उन्होंने अपनी पूरी इंद्रियां, व्हाट इज द श्लोका, मना सबई मना कृष्ण पदार बिंद्यो वाचाम सि वैकुंठ गुणानुवर्णने. सो इन श्रीमद् भागवतम multiple places reinforce that our all energies, our all senses should be engaged into service of the Lord. And like it is said, if tongue is not being used for service to the Lord, तो जो जीव क्या है वो मेढक का ना. प्रभुपाद जी very funny way Prabhupada explained, like na tar, we are making the sound but it's not used. Same ear, if not used for hearing about Krishna's the holy name, ear is like snake holes, सांप जहां रहते हैं. And the hands are not used service to Krishna, they are the hands of a dead person. So like this, if our senses are not being used and they belongs to Krishna and they have been given to serve Krishna. So like in our last class we have discussed about na aham hi sarva yagyana bhokta cha prabhur evicha नातु माम अभिजानन्ति तत्वे नातस चवन्ति ते. So Krishna himself is saying, aham hi sarv yajnanam bhokta cha prabhur evacha. तो जितने भी सैक्रिफाइसेस हैं, सैक्रिफाइस का मतलब है, जर्नली प्रभुपादा इस रिटनिंग ना, प्रभुपाद ने परपट में बताया आज के कि सैक्रिफाइस का मतलब होता है, यज्ञ का मतलब जर्नली क्या होता है, कुछ आगे जला लेते हैं, उसमें कुछ डालते रहते हैं और कुछ बोलते रहते हैं. सो दैट काइंड ऑफ सैक्रिफाइस मे बी लुक outwardly very religious, but it has no definite meaning. Especially in this Kali Yuga, कलयुग में यदि हमको सही रूप से वो सैक्रिफाइस, देयर आर सम सैक्रिफाइस जो कि हमारे शास्त्रों में जो बोलते हैं सो कॉल्ड सैक्रिफाइस, यज्ञ में जो आहुति देना है वो दिया गया है, पर कलयुग में इज नॉट रिकमेंडेड, क्योंकि उसके बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं. उन रूल्स और रेगुलेशंस को हम आज के परिस्थिति में हम उसका अनुसरण नहीं कर सकते. सो अहम ही सर्व यज्ञानाम भोक्ता चा प्रभुर एवेचा. बट कृष्ण इज अ भोक्ता. अनदर भोक्ता कम्स वन प्लेस, यज्ञ रिलेटेड, भोक्ताराम यज्ञ तपसा यज्ञार्थात कर्मणो अन्यत लोको अयम कर्म बंधना. सो इवन भगवद गीता 4th chapter again, so in Bhagavad Gita multiple places
Krishna is saying, I am a bhokta, I am enjoyer. So any work we do, the Krishna is actually bhokta and Prabhu. And if one does not do so, भगवान के द्वारा जो रिकमेंडेड मेथड है, यदि हम उसका अनुसरण नहीं करते, even the Bhagavad Gita last it is said that what is this sloka that if we do not follow the Krishna advice we fall down. What is sloka? 1858. Mat chitta sarva durgani mat prasadat tarishyati at chet tvam ahankarat na shoshati vinashyati. So man mana mad bhakto madyachi mam namaskaru ananyas chintanto mam e jana paryupasate. So full Bhagavad Gita, all Vedic literature, especially Srimad Bhagavatam, Bhagavad Gita, because they promote pure devotional service, वो हमको शुद्ध भक्ति के स्तर पे लेना चाहते हैं. तो उसमें हर जगह बताया गया है, यदि हम अपने इंद्रियों से भगवान को सेवा में नहीं लगाएंगे तो चवंती ते वी फॉल डाउन. फॉल डाउन का मतलब है we get caught up in this material world with the cycle of birth and death, and we keep doing adjustment, one adjustment, another adjustment, another adjustment. Like yesterday when we were hearing Srila Prabhupada, we might have observed very clearly Prabhupada saying, if one follow the Krishna's words given in Bhagavad Gita, and Prabhupada was quoting especially the one or two slokas, na sarva dharman pratyaj mamekam sharanam vaja aham tvam sarvapebhyo and ananyas chintanto mam e jana paryupasate tesam. Then what is that? Pasate tesam nityabhyuktanam yogakshemam bhamyam. So Krishna says, you think of me, you worship me, हम आपकी जितनी भी जरूरतें हैं, आपको जो कुछ भी चाहिए, materially, spiritually, whatever you require, I will provide. So we must have faith in the words of Krishna. Prabhupada. If Krishna is promising, do what I say, surrender to me, man mana mad bhakto madhyachi mam namaskaru, ananyas chintanto mam, then whatever your requirement will be provided. So this is connection to the today verse where Prabhupada is saying, Yug Dharma for this age is Sankirtan Yajna. And this Sankirtana Yajna has to be performed by everyone. There's no exception ki somebody is not required. And for any yajna you do, is a Yajneshwara. Who is a Yajneshwara for Sankirtan Yajna? Chaitanya Mahaprabhu. So by Sankirtana, we worship Chaitanya Mahaprabhu. And Prabhupada was writing in the purport, in the last para of the purport, in the 11th contour, where it is mentioned. Which sloka in 11th contour? 11th contour, there is a beautiful verse about Chaitanya Mahaprabhu. Krishna Varnam Tusha Krishnam Sango Pangas Parshadam Yagne Sankirtan Praye Yajanti Sumedasa. Very emphatically is mentioned in the Kali Yuga, the Lord can be worshipped by Sankirtan Yajna. The most perfect way to please the Lord for the Sankirtana. By doing so, all the requirement, जितने भी सभी जीव की रिक्वायरमेंट हैं, भगवान पूर्ति कर देंगे. Even material level. Anyway, spiritually is unparalleled, beneficial. And it's very easy to perform Sankirtan.
There's a verse in one Purana, it is said that if somebody gives charity in cows, how many? 1 कोटि, 1 करोड़ गाय कोई दान में देता है, सुमेरु पर्वत जितना सोना दान में देता है, और प्रयाग में जाके 1 कल्प तक तपस्या करता है, इन सबका जो कॉमुलेटिव जो सबका मिला के जो 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 पुण्य है जो मिलता है, यदि कोई बोलता है वो 1 बार हरे कृष्ण मंत्र बोलने से हो जाता है, वो पाषंडी है, उसको हरे कृष्ण मंत्र पे विश्वास नहीं है. Millions of Ashwamedh Yajna cannot be compared with chanting the holy name of the Lord. And Srila Prabhupada mentioned our all activities, what we do under the umbrella of Hare Krishna movement, all are meant to promote Sankirtan Yajna. Like Bhakti Siddhanta Thakur Maharaj used to say, in the railway, the Chanchapati Prabhu also was mentioned in one of the class. In the railway, they have some advertisement. What is they say? Wheel must move. All activities in the railway. They may have a leisure, they may be doing some entry, somebody is selling the ticket, somebody is printing the ticket, somebody is selling. All are meant to move the wheel. तो हमारी जितनी भी एक्टिविटीज हैं अंडर द अम्ब्रेला ऑफ हरे कृष्णा मूवमेंट should be promotion of Sankirtana. And by Sankirtana is Chaitanya Mahaprabhu's worship, and he is a Yajneshwara, and when he please all our needs and the requirement spiritually materially fulfilled. Elsewhere, just I was reading a few days back, I don't remember which place, either conversation, the books, Srila Prabhupada, Bodha says, any activity we perform in our Hare Krishna movement under the umbrella, we must pay before performing that activity to Panchatattva, especially Chaitanya Mahaprabhu. So our any activity which you must miss may pray to the, because he is a Yajneshwara for this moment. And as I said, it's meant for everyone. And not everyone may be able to come to the 16 rounds, or may not be so fortunate enough to take complete shelter of Srila Prabhupada as a completely initiated, dedicated devotee. But Prabhupada wanted, and Chaitanya Mahaprabhu also wanted and had done so to public Sankirtana. Prabhupada writes in one of the purport of Bhagavad Gita, the evening the family members can sit together and do some Sankirtana. And especially in India, भारत में स्पेशली लोग बहुत सरल स्वभाव के होते हैं. किसी को बोलो थोड़ा भगवान का नाम है, 1 माला जप करिए, तो very even some good people, very well educated also, they take it very easily. Yes, प्रभु जी 1 माला करेंगे, थोड़ा फॉलो अप करो, they start doing. And this Sankirtan is very, very powerful. Even when Chaitanya Mahaprabhu, he is the Lord himself, is teaching by his personal example. Prabhupada writes in the preface of teachings of Lord Chaitanya, like a teacher take a pencil and write A, B, C, D on the board to teach children how you should write A, B, C, D. तो प्रभुपाद जी बोलते हैं वहां पे, यदि कोई टीचर ABCD लिख रहा है ब्लैक बोर्ड पे, तो इसका मतलब नहीं है वो ABCD सीख रहा है, वो क्या कर रहा है, सिखा रहा है विथ हिज ऑन एक्शन. सो उसी प्रकार चैतन्य महाप्रभु जो कि स्वयं कृष्ण है, वो अवतरित हुए हैं. और क्या, किसके लिए अवतरित हुए हैं? वो
भक्ति करने के लिए। और कौन सी भक्ति? जो कि उन्होंने वो वाली भक्ति किसी को दी नहीं। अनर्पित चरी में चिरात करुणया अवतीर्ण कलो समर्पयुतुम उन्नतोज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम हरि पुरट सुंदर दुति कंदप संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फूर्तु वा सचिनंदना। सो अनर्पित चरी में चरात करुणया अवतीर्ण कलो। इन द कलयुग में भगवान जो करुणा देने के लिए चरी में चरात, ऐसी करुणा उन्होंने अनर्पित कभी दी नहीं थी। और कौन सी करुणा है वो? समर्पयुतम उन्नत उज्ज्वल रसाम स्वभक्ति श्रियम, और ओन लविंग डिवोशनल सर्विस ही इज डिसेंडेड टू गिव। एंड विच फॉर्म इज केम? हरि पुरट सुंदर दुति कदम संदीपिता। He is descended in the golden form. And what we should do, everyone should do, it is said. What we should do, this verse was compiled by Rupa Goswami. So everyone should sada hriday kandare isfurtu va sachinandana. What we should do? Innermost chamber of the heart. Means inside heart we have to open, we have to put, no. Very close to heart. Now we have liking, we have now the attachment to certain thing, we have to be most attached to Sachinandana. And attachment to Sachinandana means attachment to what does attachment to means? Whatever he taught us, उन्होंने जो हमको सिखाया है और जो करके बताया है, उसको हमको जीवन में अपनाना है। जब चैतन्य महाप्रभु बनारस गए तो ही एज ए सन्यासी, एंड उन्होंने सन्यास किससे लिया था? केशव भारती से, जो कि एक मायावादी है ना स्कूल में और इंस्टीट्यूशन में बिलोंग करते थे। सो व्हेन ही वेंट टू बनारस, जब बनारस आए तो क्या कर रहे थे? वो सड़कों पे नाच रहे थे और कीर्तन करते हुए जा रहे थे, हरे कृष्णा से लाइक chanting एंड डांसिंग। तो बहुत सारे सन्यासी देखे, अरे यार ये तो हमारे संप्रदाय का है, कैसे सेंटिमेंटल जैसे क्या कर रहा है। तो उन्होंने चैतन्य महाप्रभु को थोड़ा क्रिटिसाइज करना शुरू किया। फिर बाद में एक ब्राह्मण आके चैतन्य महाप्रभु को बोलते हैं, हमको ऐसा बहुत दुख हो रहा है, ऐसा ऐसा हो रहा है। विच ब्राह्मण was? महाराष्ट्रियन ब्राह्मण, इज अ डिफरेंट ब्राह्मण। देन बोलते हैं कि चलो आप अपने घर में सभी की ईस्ट गोष्ठी, सबको बुलाइए, मायावादी को, हम भी आएंगे। जनरली चैतन्य महाप्रभु वाज नॉट एसोसिएटिंग, पर यहां पे वो एक चीज सिखाना चाहते थे। तो जैसे आप सबको पता होगा, सब लोग आए, अब जहां पैर धो के सब लोग बैठ रहे थे अंदर, और उसमें जो मेन सन्यासी कौन थे? प्रकाशानंद सरस्वती। कितने डिसाइपल थे? 60,000 डिसाइपल्स हियर यूज। एक फोटो है ना, सबका शेयर करो, बैठे हुए बीच। तो वो सभी बैठे थे। तो चैतन्य महाप्रभु लास्ट में आए। चैतन्य महाप्रभु ने क्या किया? जहां लोग पैर धोए थे वहां जाके बैठ गए। Now can you see the Lord, how humble it is? Now people are washing the feet and going sitting inside. He was called, जहाँ पे लोग पैर धो रहे थे वहां जाके वहां बैठ जाते। तब प्रकाशानंद सरस्वती क्या देखते हैं? क्या देखते हैं? बहुत प्रकाश आ रहा है उनके शरीर से। और जब प्रकाश को देखे, प्रभावी देखिया तोमा साक्षात नारायणा हीनाचार कर कीने यथे की कारणा। वाई यू सिटिंग हियर? आप उनका जो एफल्जेंस लाइक नारायणा। सो ही वॉज वेरी, देन वो खुद जाते हैं और क्या करते हैं? चैतन्य महाप्रभु को अपने हाथ से पकड़ के बीच में सभा में ले आते। कुछ मुझे एफल्जेंस देख के कि ऐसा एफल्जेंस नहीं था।
Actually, when we chant Hare Krishna, some effulgence will come. In sense, प्रभुपाद के समय बोलते थे ना कि whenever जो प्रभुपाद जी के डिसाइपल्स होते थे, आपके बहुत ब्राइट लगते हैं आपके डिसाइपल्स. यहाँ पे कई लोग थे, प्रभु जी आप लोग बहुत चमकते हैं. So that's the way. Some by chanting the holy name, when purification happens in the heart. तो प्रकाशन सरस्वती ने पूछा, अरे आप तो ऐसे हैं, तो आप कैसे आप सेंटिमेंट की तरह, if you are sannyasi, what you should do? Sit, read Vedas, Upanishad, do some discussion. But what is kind of your sentiment? आप संन्यास ले लिए, वो भी ना हमारे संप्रदाय से क्या कर रहे हो? Simply singing and dancing on the street, holy name, भगवान का नाम. तो चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, प्रभु कहे सुन श्रीपाद आहार कारणा, गुरु मोरे मूर्खा देखी करीला शासना. तो चैतन्य महाप्रभु बोले हैं कि क्या कारण है कि जो हमारे गुरु थे उन्होंने क्या देखा, ये तो क्या है, मूर्ख है. चैतन्य महाप्रभु रिप्लाई टू प्रकाशानंद सरस्वती, माय डियर सर, काइंडली हियर द रीजन. माय स्पिरिचुअल मास्टर कंसीडर मी ए फूल, देयरफॉर ही चेस्टाइज मी. बोले कि तुमको समझ में नहीं आएगा. मूर्खा तुमी, कौन बोल रहे हैं? ईश्वर. चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं ऐसा हमको ना, ही इज टेलिंग प्रकाशन कि ऐसा, मूर्खा तुमी तुम्हार नाही का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार. बोले तुम्हारे वेदांत पढ़ने का अधिकार नहीं है. चैतन्य महाप्रभु जनरल पब्लिक को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, हम सभी लोगों को. व्हेन वी रीड द स्क्रिप्चर्स, हम उसको अलग ढंग से ले लेते. That's the reason the Buddha has to come, the Shankaracharya, they were interpreting the scriptures different ways. Even today Prabhupada ji बोलते हैं ना कि some lady had asked Prabhupada writes in the preface of Bhagavad Gita कि which Bhagavad Gita should read. But there's a lot of editions over there, more than some 700. Prabhupada ji बोले, I could not thought of one edition where the author is not contaminated by his own interpretation. कालिन नष्टा योग ना, सा कालिन महता योगो नष्टा परंतु. Prabhupada says that the parampara is lost. That's the reason Prabhupada says, I am coming to re-establish the parampara. Parampara loss means the conclusion. People are misunderstanding the knowledge. So here Chaitanya Mahaprabhu was told by his Guru Ishwarpuri, मूर्खा तुमी तुम्हारा नाही का वेदांत अधिकार, कृष्ण मंत्र जप सदा ए मंत्र सार. So you are a fool, he said. You are not qualified to study Vedanta philosophy. Therefore you must always chant the holy name of Krishna. This is the essence of all mantras or the Vedic hymns. One place Prabhupada writes, who is chanting Hare Krishna mantra, he is the fill in the blanks. He is the topmost Vedantist. So same thing here being presented Chaitanya Mahaprabhu, and this beautiful purport, very long purport. He said you cannot chant, you don't require. He is representing to us. Then he says, Krishna mantra hete habe संसार मोचना, कृष्ण नाम हैते पावे कृष्ण चरणा. सो कृष्ण मंत्र हैते हवे संसार. इफ एनीवन चांट हरे कृष्ण मंत्र, he can be relieved from this material world. And that's only, he will not relieve only, and what will happen? Pave Krishna charana. He will also get the lotus feet of the Lord or devotion. So simply by chanting the holy name of Krishna, one can obtain freedom from material existence. Indeed, simply by chanting Hare Krishna mantra, one will be able to see the lotus feet of the Lord.
Nitya Siddh Krishna Prem Sadh Kabu Noy Sharvadi Suddh Chitta Karyoday. When we chant Hare Krishna, what happened? Cheto Darpan Marjanam Bhav Mahadavag Nirva. So our heart start cleaning. Self-knowledge is there, but it's now being covered. One paper, there's a 16 layers of coverings are there with our soul. So by chanting, even if one does not understand the meaning, what is this? Is still the holy name will act. And automatically the bad habits will go and sinful reaction will go. Like Srila Prabhupada went to America first. What he did? He sat down in one park, Thompson Square Park, and Prabhupada used to say he is a one dubdubi or sometimes small kartal. Prabhupada used to close the eyes and dubdubi like this, Prabhupada some there or small kartal. Prabhupada used to start kirtan. After 3 hours, continuous kirtan. Mic was not there. Alone, old person. And when Prabhupada used to open the eyes, thousands of boys, girls, they are getting the ecstasy in chanting and dancing. So this holy name is very, very powerful. Now when one dance, they are very happy. So by chanting the holy name, sometimes, many times, we see a lot of visitors comes in our temple. तो जब कीर्तन होता है वो अपने आप दे स्टार्ट डांसिंग विदाउट, तो बोले प्रभु ये पता नहीं हाथ अपने आप घूमना शुरू हो जाते हैं. तो so that is the wonderful thing by holy name. The Lord has given us a very simple method, and that too indeed simply by chanting Hare Krishna mantra one will be able to see the lotus feet of the Lord. Now that is Parama Karuna Pahuduijana Nitai Gora Chandra Sava Avatara Sara Siromani Kevala Ananda Kanda. तो जो वो मेथड दे रहे हैं टॉप मोस्ट सबलाइम बेनिफिट है, पर ऐसा नहीं कि बहुत कठिन है, थोड़ा कुछ नहीं खाना है 10 साल तक और सिर को ऊपर पैर को नीचे करनी है, सिर को नीचे पैर को ऊपर करना है, ऐसा बहुत कोई ज़्यादा सर्कस नहीं करनी है. इट्स सो केवल आनंद कंदा एज वेरी जॉयफुली कैन बी परफॉर्म्ड. भजो भजो भाई चैतन्य निताई सुदृढ़ विश्वास करी, बट फर्म फेथ वी हैव टू व्हाट इज इट बेसय छाड़िया से रसे माजिया मुखे बोलो हरि हरि. So is requested by Lochand Das Thakur, if you do 2 things, Bisay Chadiya, don't come out from sense gratification, and Mukhya Bolo Hari Hari. So many times when even though chanting sometimes does not come into the right platform, because the chanting is like igniting the fire, and sinful activity, sense gratification, is something like pouring the water. So, if we aloof from sense gratification thoughts or actions, then our chanting will produce very fast, very quick result. But anyone, so simply by chanting the holy name of Krishna, one can obtain freedom from material existence. Indeed, simply by chanting the Hare Krishna mantra, one will able to see the lotus feet of the Lord. Then it says, Naam binu kali kale nahi or dharma sarv mantra sar naam hi sastra marma. So Naam binu kali kale nahi or dharma. There's only one dharma in the Kali Yuga, by chanting the holy name. Hare Naam, Hare Naam, Hare Naam evi kevalam kalo nastyu, nastyu, nastyu. Can you see how many exactly are there? Hare Naam 3 times.
Harinam, 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 Eva Kevalam. 3 times, one Eva Kevalam, Nastyu, Nastyu, Nastyu. There is nothing. Gatir Anyata, there is no other way. 3, 4 exits are there. If there is no other way, there is no other way, there is no other way. So that's the reason for the in this age is the Sankirtana is a way to worship the Lord, and Sankirtana, the Yageshwara deity is the Chaitanya Mahaprabhu. So Chaitanya Mahaprabhu is very pleased when with the Sankirtana Yagya. So Naam Binu Kali Kale Nahi Aur Dharma Sarv Mantra Sar Naam Sastra Marma. So in this age of Kali, there is no religious principle other than the chanting of the holy name, which is the essence of all Vedic hymns. This is the purport of scriptures, all the purport of scriptures. For the right in this purport, since Krishna and his holy name are identical, the holy name is eternally pure and beyond material contamination. It is Supreme Personality of Godhead as a transcendental vibration. There is no difference in the Lord and the holy name. The holy name is completely different from material sound, as confirmed by Narottama Das Thakura. Goloreka Premedhana Harinam is imported from the Golok Dham. It does not belong to this sound vibration, does not belong to this material world. Then his Guru is saying to Chaitanya Mahaprabhu further, Et bali ek islok sikhaila more. कंठे करी ई श्लोक करी विचारे. सो चैतन्य महाप्रभु सिंह हमारे गुरु ने हमको एक श्लोक सिखाया. आफ्टर डिस्क्राइबिंग द पोटेंसी ऑफ हरे कृष्ण मंत्र, माय स्पीच मास्टर टॉट मी अनदर वर्ड्स, एडवाइजिंग मी टू ऑलवेज कीप इट विद इन माय थॉट. सो दैट द फेमस वर्स सेम, हरे नाम एव केवलम खलो नास्त्यु नास्त्यु गते. सो दिस श्लोका told by Ishwarpuri to Chaitanya Mahaprabhu and put the very big purport. E agya pana naam lai anukshana naam lete lete more भ्रांता हले मना. तो बोला कि हमारे गुरु ने बोला कि इसका नाम का जप करिए. जप करते करते क्या हुआ हमारा? आई एम गेटिंग बिविल्डर्ड, मन हुए भ्रांता, हमको समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है. धैर्य धरिते नारी हैमान अनमता हासी कांदी नाची गाई एछे मत मना. सो पता नहीं हम जब जप करते हैं तो अपने आप हम क्या होते हैं? while chanting the holy name of the Lord, I get pure ecstasy, I lose myself and start laugh, cry, dance and sing like a madman. तबे धैर्य धरी मने करी विचार कृष्ण नाम जाना इच्छन यह अमार. Then you see what is happening to me. He start thinking, why am I becoming mad? शायद उन्होंने जो मंत्र दिया उसमें कुछ प्रॉब्लम होगा. So he comes, his guru, he says, पागल हैना आमी धेर नाई मने एत चिंती निवेदनु गुरुर चरणे. So I saw that I had become mad by chanting holy name. I immediately submitted this at the lotus feet of my spiritual mother. What is happening? So then Chaitanya Singh, Kiva mantra dila Gosai, Kiva tar bala, Japati mantra karile pagala. What mantra you given to me? Some problem? By chanting, I become. So my dear Lord, what kind of mantra have you given me? I have become mad simply by chanting this Maha Mantra. So like this, where it is being personally depicted by Chaitanya Mahaprabhu by chanting the holy name is very powerful, and he is also teaching by his personal example. And as we know, when Prakashan Saraswati and all his disciples, they all get converted to the Vaishnava culture, and they start taking the chanting of the holy name in the world. So as I said, this holy name is meant for the everyone, and Chaitanya Mahaprabhu wants us to this has to be distributed. And when Chaitanya Mahaprabhu is saying,
सर्वादि नरग, व्हाट इज श्लोक? पृथ्वी ते आचे नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार होवो मोरो नाम. सो ईच टाउन एंड विलेज, जितने भी गांव शहर कस्बे जितने भी है, सब जगह चैतन्य महाप्रभु का नाम का प्रचार होना है. वो चैतन्य महाप्रभु की इच्छा है, वो चाह रहे. तो हमारा एक कर्तव्य बनता है, बीइंग द डिवोटी ऑफ चैतन्य महाप्रभु, नगरादि गिरा, और सर्वत्र प्रचार हो वो मोरो नाम. तो चैतन्य महाप्रभु बोला हमारा नाम प्रचार होगा हर गांव में. तो चैतन्य महाप्रभु का नाम ना मधु पंडित प्रभु बोलते सबसे लंबा नाम है चैतन्य महाप्रभु का. वो क्या है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम, चैतन्य महाप्रभु का नाम है. तो इसका प्रचार होगा. तो when say मोरो नाम means this mantra get distributed everywhere, and people get benefited by it. Sri Chaitanya, Radha Krishna Nayanya. So we should try whatever. And as we know, big temple may come on the only few places, or maybe this thing, but Sankirtana temple can be there everywhere. You don't require a roof. You can do wherever you want. You can start Sankirtan, and the Sankirtana temple get manifest there. And where the Sankirtan is happening, as he said, is very pleasing to Chaitanya Mahaprabhu. And Prabhu otherwise, when you do Sankirtan, Chaitanya Mahaprabhu himself comes and start dancing with the devotees. And it's the most purifying, and Chaitanya Mahaprabhu is a topmost education. What is that topmost? Vidya Badhu Jivanam. All the knowledge, all the detachment, everything will manifest when we do Sankirtana. So the whole, that's the reason Prabhupada says the whole our movement is Hare Krishna movement to propagate the holy name. So in this particular sloka, Prabhupada is emphasizing that, and especially in this age, we must propagate the holy name, and we must do sincerely ourselves, and also inspire people, whatever degree, they may not be able to chant the 1 mala, 2 mala, 3 mala, they sit, they do some Sankirtana, as many places, the whole universe, whole world will get benefited, and this world will become very peaceful and happy by Sankirtana. So I will stop here. ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय, जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय, निताय प्रेम नंद।